Minister of the state of Maharashtra. All right, thank you, Alisha, there for getting us all the details. So we have got an inside scoop, viewers, on the Maha Cabinet reshuffle. And what we can tell you is that Deputy CM Devendra Fadnavis has been given the Home and Finance Ministry, and Urban Development remains with CM Eknath Shinde. Also, investor and billionaire Rakesh Jhunjhunwala has now breathed his last at the age of 62. He spoke to Editor-in-Chief Arnab Goswami in a special edition of Nation Wants to Know back in the year 2021, where he put forth his forecast on the growth prospects of the Indian economy. Listen in. Rakesh, how important in your view? I'm only looking at macro perspective. What I love the most about your comments is a futuristic perspective. So let me pick up one prophecy that you have made and then link it to our present. It was 2 months ago, since we just spoke about China a while back. It was 2 months ago you said, and I quote, "You may call me a fool, you may call me anything, I may not live to see it, but I can tell you one thing, India will overtake China in the next 25 years. So this was, first question was, what makes you so certain? What is the tell? And second question, if you can also answer that, please, how important is the present political dispensation, the Modi government, the stability we have to that? I don't want to discuss politics so much now. Let's look at the economic realities. So see, what I say this statement, because I've seen one thing, that when the forces of growth will unleash themselves, we are underestimating the extent to which they will go. I've learned in the stock market, that the highs are always higher than you ever dreamt. The lows are always lower than what you ever feared. So I think in my perception, when these forces of growth, when reform takes place, it comes together and the forces of growth are unleashed in this country, we are underestimating the kind of growth it will bring in this country. I'm afraid to say it, but I think we could grow more than 10% for decades, for at least 2 decades, just like China did. So I see no reason why we will at least not be able to overtake or reach China's per capita GDP. Taking it further from there, we've seen how dynamic the global order can be, especially during COVID. So those who are considered the big players are fast changing, new players are coming in. What is the new global order that we should be preparing ourselves for? China is going to be a big part of the global economic order, and we are also going to be a big part of the global economic order. I think United States influence and power will always remain. I don't know about Europe. And the Soviet Union population is declining. And even in Europe, population is declining. So I think Europe, Japan, Russia may not be as important. But America, China, India are going to be America already is. I think China and India are going to be big players on the world's economic stage. And consequently on the political stage. Can India be a superpower by 2030? Say 9 to 10 years from now? I know, I will give that at least 1.5 to 2 decades. Real superpower. And when you say superpower, what are the indices that you look at for a country to achieve that position? India's political importance, India's contribution to the world economy. I think these are the two main, India's contribution to the world economy, and consequently, remember one thing, that our power flows from the economy. The larger the economy, the greater its importance. I think India undoubtedly will be among the world's top 3 economies. Not on PPP basis, but on active basis. After the sudden demise of India's big bull, Rakesh Jhunjhunwala's final rites will be performed around 5:30 today in Mumbai's Malabar Hill. Jhunjhunwala was brought dead to Bridge Candy Hospital around 6:45 this morning. Following the demise of ace investor of India's global history, Prime Minister Narendra Modi paid condolences to Rakesh Jhunjhunwala's family and admirers.
Prime Minister, in expressing grief, said he was indomitable, full of life, witty and insightful. He has left behind an indelible contribution to the financial world. In an exclusive conversation with Republic's Jammu's ADG, Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said that terrorist groups are in bid of infiltration and to target security camps. To avoid any act of terrorism in the Union Territory, anti-drone has been installed and public has been briefed about the threat. इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो ये दिखाता है कि आतंकी संगठन जो हैं लगातार प्रयास में जुड़े हैं, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए हो, चाहे उनकी इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स हों, चाहे वो किसी को टारगेट करना हो, चाहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप्स को टारगेट करना हो. इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं. हमारे पास सफिशिएंट फोर्स अवेलेबल है. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers, as per the Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan said in total 4 districts will be covered. Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women rally which will be carried out after Sunday. आज हमारा तीसरा दिन है और इस रैली के तहत हम 4 जिलों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हिसार, जींद, फतेहाबाद और सरसा है. और आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम पे इस रैली को कंडक्ट कर रहे हैं. At the mega occasion of India's 75th year of independence, Aviation Minister Jyotiraditya Scindia took part in Har Ghar Tiranga campaign in Madhya Pradesh's Gwalior city. As India is gearing up for Azadi Amrit Mahotsav, the Indian Army hoisted the national flag today. In a tweet, the Indian Army urged everybody to hoist the tricolour at their homes. Congress leader DK Shivakumar sparks a row on Tipu Sultan's poster. Addressing the media, Shivakumar said miscreants have torn the posters of a national fighter, Tipu Sultan. He further said that despite celebrating the freedom fighters all across the nation, such acts are happening, which is unacceptable. Preparations have now started to celebrate the Independence Day in the financial city of Mumbai. To mark the Independence Day, Mumbai police has organised Amrit Mahotsav of Freedom Run today, which was flagged off by Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. Here's a report. Well, here we can see it's a Mumbai police who have organized the Amrit Mahotsav Freedom Run. And we saw there were a number of vehicles with the Tiranga, now with the flag, the green flag, which has been flagged off by Devendra Fadnavis. And now the Mumbai police has started their marathon. It's a freedom run of Amrit Mahotsav. It's a proud moment for every Mumbaiker, for every nation. What we have been witnessing and what we have been told, that it's a 3,500 police official has taken a part in this. That's even a women police officials across the Mumbai police station, where there are police officials around more than 3,500 police officials has taken a part in this Amrit Mahotsav Freedom Run, which is organized by Mumbai Police itself. A proud moment for every Mumbaiker, a proud moment for every nation. The marathon, which was flagged off by Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. We can see Mumbai Police Commissioner Vivek Fansalkar on stage. Also Praveen Darekar, Joint CP Crime, Suhas Savarkar, Joint CP Law and Order, Vishwas Nagri Patil. All the senior police officials to motivate their police officials on road who are started with the marathon run.
are here to motivate them. This is nothing but a beautiful picture what we have been witnessing at this point of time. We saw the numbers of vehicles that went to a lane which will give a free lane for the runners. In the training camp in Rajouri, Indian Jawans are being made battle ready and primed. Watch our brave hearts target practice in this exclusive report of Republic Media Network. The Jawans of the Indian Army deployed along the line of control are all prepared. They are battle ready to counter any kind of situation that is emerging from the adversary, especially the nefarious designs of the Pakistan. And these brave hearts of the Indian Army are equipped with Negev, AK, snipers, as well as the newly introduced 6 rifles. These rifles have the capacity to destroy and decimate the nefarious plots of the enemy. And these Jawans are undergoing the rigorous training here at the training camp in the Rajouri, where they are being prepared to tackle any situation. Now they will be doing fire. It will show the might of the Indian Army on ground, that how these brave hearts of the Indian Army, they are all prepared for any kind of contingency. Now Gaurav is showing you that how different weapons, including the 6 the AK, the Ansas, the Negev, they will be taking a shot at the enemy. Important to mention that the newly introduced 6 and the Negev have proved to be really very lethal for the Pakistani side, as they have totally decimated the terror infrastructure as well as the plans of the enemy, that how can they even dare to enter the Indian side or have the nefarious eyes on the Indian side. This is how the terror infrastructure is decimated at the line of control. As the nation celebrates 75th Independence Day, now the forces are on the alert on the international border as well as on the line of control. Right now we are in the Rajouri sector of the line of control, where the troops of the Indian Army, they are alert. They are keeping a strict vigil on each and every movement of the enemy, as we are just a few meters from the Pakistani side, which is always in a bid to sneak into the Indian territory and to carry out some major terror strike inside the territory. This is the same sector where the Pakistani terrorists attempted a suicide Fidayeen attack on the Indian Army camp, and now the security has been beefed up on the international border as well as on the line of the control. These Jawans of the Indian Army are using every possible tool so that they can keep a strict vigil on the ground. The sniper dogs, specially trained sniper dogs of the Indian Army, they are also keeping a check on any possible explosion on the route. And also the new threat that is being posed by the adversary is the drone challenge, and to counter the drone challenge, drones are being used by the Indian side also to keep a strict vigil on ground. See how these drones are manning the line of control in the Rajouri sector, and this clearly sends a message to the enemy that we are not only keeping a strict vigil on ground, but also from the sky we are monitoring each and every movement of the Indian Army here on the line of control. The Jawans of the Indian Army, they are doing patrol along the line of control, and this is what sends a clear message to the Pakistan that the Indian Army will maintain the sovereignty and the integrity of the country, no matter how many challenges are being posed by the adversary. And on the 75th year of the independence, the message from the line of control is very clear that we will protect our sovereignty, integrity and the unity of Mother India at any cost. These are those brave hearts who have made supreme sacrifice at many times on the line of control, but have ensured that everything goes smooth and well. At least 5,000 people gathered in Indore on the eve of the Independence Day to coordinate and form the Indian map. A flag atop 108 feet long pole was unfurled in Jammu and Kashmir's Baramulla. The flag was raised ahead of the Independence Day in Jammu and Kashmir's third largest city. Mumbai police organized a 10-kilometer marathon race of police personnel along with a bike and vehicle rally
at the Marine Drive in Mumbai. The event was flagged off by the state's Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, while Akshay Kumar was also present at the event. The Azadi Amrit Mahotsav was celebrated as a cycle rally at the National Police Memorial in New Delhi's Chanakapuri with Indian Judo and CWG silver medalist Tulika Man present at the event as well. An NGO organized a run with former soldiers to raise funds for the soldiers as well as their families in Bengaluru. A band of the armed forces was seen performing tunes at the event. Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath flagged off a bike rally as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav in the state's capital of Lucknow. Built in 1877, the Victoria Bridge in Mandi that connects two parts of the Himachal town was illuminated in the colours of the Indian flag. Jammu and Kashmir's Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the walkathon organised by BSF in Srinagar as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, as several events are organised across the country to commemorate 75 years of the country's independence. Republic is now reporting from the Siachen base camp, where it's not just the enemy but braving the weather and terrain poses immense challenges. Watch how our Jawans protect a nation at the world's highest battlefield. Apart from the enemy, the biggest challenge for the soldiers serving in the base camp is the weather, because you are fighting not only with the enemy but also with the weather, which is absolutely adverse, because here even in these months the temperature goes minus 15 or 20 during nights. The kind of equipments that the soldiers use for their training in these mountainous area, I'm showing you the visuals of the instruments that are being used by the soldiers while climbing or carry their training. In fact, I'll ask my VJ Firdos to show you not only the visuals of the equipment, but let me speak to one of the instructors to know about the importance and the function of these kind of equipments at such place. आप सर बताइए कि ये जो equipment इतना लगा हुआ है, इसका क्या function और किस तरह से इस्तेमाल होता है? ओके मैम, इस टेबल के ऊपर जो भी एक सामान हमने डिस्प्ले किया हुआ है, इसमें सबसे पहले रॉकक्राफ्ट का, आइस क्राफ्ट का, उसके बाद में स्नो क्राफ्ट का, उसके बाद में क्रेवास रेस्क्यू का, एवलांच रेस्क्यू का, और यहाँ पे लास्ट में जो है स्पेशल क्लोथिंग डिस्प्ले किया हुआ है. तो इसका एक एक करके दिखा देते हैं. हाँ बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल कैराबिनर ऑल टाइप्स. इसका इस्तेमाल जो है हर एक क्लाइंबर अपने आप को एंकर करने के लिए और इसका इस्तेमाल करते हैं. रॉक पिटॉन ऑल टाइप. रॉक पिटॉन का इस्तेमाल जो हम रॉक फेस के ऊपर बेस बनाकर करते हैं. फिगर 8 डिसेंडर. इसका इस्तेमाल जो है एक क्लाइंबर अपने आप को कंट्रोल से रैपलिंग करने के लिए और बिले करने के लिए करते हैं. बिले स्टॉपर. बिले स्टॉपर का इस्तेमाल भी एक क्लाइंबर आसानी से, दो बंदों को आसानी से बिले कर सकता है. नेक्स्ट गिरीगिरी. गिरीगिरी का इस्तेमाल भी हम आसानी से बिले करने के लिए और साथ ही साथ एक अनट्रेन्ड क्लाइंबर जो है आसानी से रैपलिंग कर सकता है. जुमार. जुमार का इस्तेमाल जो है एक अनट्रेन्ड क्लाइंबर फिक्स रोप के ऊपर अपने कॉम्बैट लोड के साथ आसानी से हरकत कर सकता है. मैं यहाँ पर शूज देख रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस होती है ऐसी जगहों पर इस तरह की. What is the difference between a normal and this kind of shoe? ओके मैम, जो यहाँ पे शू जो डिस्प्ले किए हुए हैं, ये नॉर्मली बूट स्कारपा बोलते हैं हम इसको. ये 2 लेयर में आते हैं, आउटर एंड इनर लेयर्स में. जो आउटर लेयर हैं वो हमारे बर्फ को अंदर घुसने से बचाते हैं, और जो इनर लेयर हैं वो हमारे पाँव को गर्म रखते हैं. और इनके नीचे जो है स्कारपा शूज के नीचे जो हम क्रैम्पोन लगा के हरकत करते हैं, ये हमें फुट होल्ड का काम देते हैं, क्योंकि ग्लेशियर में हमारा पाँव है स्लिप नहीं होगा इसकी वजह से. और इसके ऊपर हम गैटर्स लगाते हैं जो कि सॉफ्ट स्नो को अंदर जाने से रोकते हैं. तो काफी मेहनत लगती होगी इस तरह के बूट्स पे चलने के लिए. जी मैम, क्योंकि इनका वेट अप्रोक्स 2.5 से 3 kg है, तो मैक्सिमम जैसे ज्यादा लंबा हमने रास्ता तय करना हो तो वेट के साथ जो है काफी इसमें लोड पड़ता है और जल्दी थकान ज्यादा होती है. तो इस तरह के शूज पे चलने के लिए कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती होगी सोल्जर्स को? यस मैम, इसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग हम इसके अंदर जो ट्रेनिंग देती है 3 वीक की ट्रेनिंग होती है, उसी के अंदर इनको उनका अनुभव कराया जाता है और उसके अंदर में इनको ट्रेनिंग दी जाती है.
On the other side, Devendra Fadnavis gets additional charge in Maharashtra government handed Home and Finance Ministries. The big bull of the Indian markets, Rakesh Jhunjhunwala, is no more. Born in the year 1960, Jhunjhunwala passed away at the age of 62. He was brought dead this morning to Mumbai's Breach Candy Hospital at 6:45 a.m. Heading companies, Hungama Media and Aptech, among others. The veteran stock market investor had recently inaugurated the low-budget airlines Akasha Air, often referred to as India's own Warren Buffett. He passed away at the age of 62 following health complications. In other news, a total of 12 bodies recovered so far. In August 11, boat capsize incident near Banda in UP. Rescue operations continue following disaster as NDRF and SDRF continue to look for those remaining. Shiv Sangram party leader Vinayak Mete killed in road accident at Khopli Tunnel in Maharashtra's Raigad. Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde speaks on his demise, stating he had contributed significantly towards the Maratha Andolan and was a good leader. A Dalit child allegedly beaten severely, causing his death over drinking water in Rajasthan's Jalore. He was allegedly beaten up for touching a water container at his school and was beaten by his teacher. Getting into breaking news right now, a delegation of US lawmakers is visiting Taiwan just 12 days after a visit by House Speaker Nancy Pelosi that angered China. Remember, China responded to Pelosi's visit by sending missiles, warships and warplanes into the seas and air around Taiwan. Immediately after Nancy Pelosi left from Taiwan, what we saw in the name of military drills were escalation on the part of China. In fact, not just that, missiles landed up at the economic zone of Japan, which undoubtedly angered Japan. And warnings have also been issued by China to the United States that they are basically stepping in and perhaps it's time for them to withdraw. Let me bring in our senior executive editor, Abhishek Kapoor, who's joining us on the phone line. Abhishek, how would one see this entire move? Would it be provocative, or what Nancy Pelosi had to say once she was back in the United States, saying that perhaps United States will have to take a clear position on this matter? Well, they seem to be doing so, Shawan, and if you look at it from the Chinese point of view, obviously this is provocative because any engagement with Taiwan provokes the Chinese. That's how sensitive they are on the Taiwan question. But the fact is that there is a state of affairs that exists in that part of the world, and there are 13 countries that recognize Taiwan as an independent nation. Every other country engages with Taiwan as an entity separate from China within the one nation, two systems principle. Of course, we have seen how the Americans are sort of distancing themselves from this. We have seen how the Chinese ambassadors in Washington and London were called and issued démarches at the manner in which they have conducted themselves over the last fortnight during and after the Nancy Pelosi visit. In fact, despite having, instead of having any effect on the Chinese, we have this statement coming in from the Taiwanese National Defense Ministry, which says that 6 PLA Navy vessels and 22 PLA aircraft have been surrounding the region or have been detected today. That's August 14th, and that the Taiwanese forces are prepared and monitoring the situation and are carrying out combat air patrol and whatever other reconnaissance needs to be done to make sure that
their sovereignty is not impacted. But fact of the matter is the Chinese might have crossed the median line between them and Taiwan, and the Taiwan Strait almost a dozen times now. They don't recognize it. And in fact, we have seen how they were throwing missiles over Taiwanese territory into the East China Sea, into the Pacific, in fact. So the Chinese have made it their intent very clear that any act of engagement with Taiwan by any country, particularly the United States, forget about the United States, the reigning power of the world for now till the time the Chinese are more powerful. The Chinese have been having altercation, a diplomatic duel with a small country called Lithuania in Europe. So I think this act of American delegation visiting close on the heels of Nancy Pelosi visit, obviously the Chinese provides them another trigger to escalate things rather than de-escalate. Remember, yesterday we had Indian Ministry of External Affairs for the first time making a statement saying that de-escalation and restraint and no unilateral change of status quo should be the order of the day. And I believe that, of course, would be the expectation for of the rest of the world, also from Chinese. But as I said, any engagement with Taiwan provides the Chinese with another trigger to escalate, and we might see more of PLA Navy vessels and more PLA Air Force aircraft breaching the Taiwanese airspace or at least the air defense identification zone. Well, in fact, Abhishek, I'll request you to stay on because we're just getting in the latest visuals that are now coming in of the US delegation landing in Taipei. In fact, there's some more details that is also coming in from the administration. A tweet that has now been put out. In fact, they've given the details of the landing that's taken place. So it turns out, Abhishek, they've already landed. Shawan, which means that... Well, in fact, we'll try and go across... Abhishek, I'm sorry to interrupt you. We'll have to just slip into a short break. We'll come back to you in a short while from now as we track the story very closely. India marks Partition Horrors Remembrance Day, but Congress politics continues, questions Prime Minister Modi now. The Himachal Pradesh Assembly, in line with a few other BJP-ruled states, passed a bill to curb the mass conversions and raise the maximum punishment to 10 years of imprisonment in Freedom of Religion Act. हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो एक नई परिस्थितियां बन रही थी, कई वर्षों से हम देख रहे थे हिमाचल प्रदेश में कि बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से कुछ चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी लेकिन फिर भी होती थी। हमने उन सारी चीज़ों पर रोकने की कोशिश की। इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडियन फ्लैग को वहाँ पे देखा इटली में, तो कैसा लगा तुम्हें? जब मैं वहाँ पहुँची मैंने देखा इंडिया का फ्लैग, वाह, ये तो मैं इतनी खुश हो गई कि नहीं, अब तो कुछ करके दिखाना है। इंडिया का फ्लैग ऊपर होना चाहिए, बस इतना मैं चाहती थी और वो मैंने कर दिखाया। अगर आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, हार नहीं माननी है, क्योंकि गोल्ड तो लेकर ही आना है आपको। बचपन से सर एक ड्रीम है मेरा, अब एक तो अपनी गेम को प्रोफेशनली यूज़ करना है, प्रोफेशनली आगे बढ़ाना है और वर्ल्ड ओलंपिक्स में गोल्ड लाना है इंडिया के लिए, अपनी स्टेट के लिए।
Well, in fact, as part of the grand celebrations across the country on the Amrit Mahotsav, these are the latest images now coming in from Lucknow. Through the day, we have seen from multiple cities how people have gathered together to celebrate country's 75th independence as part of the Amrit Mahotsav. We'll try and go across to my colleague Vivek, who's there at the spot, getting us more details. दर्द है वो लोग जिस तरीके से जो विभाजन विभीषिका का जो दर्द जो देशवासियों ने झेला था वो कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल पहले ही इस बात को कहा था कि 14 अगस्त का जो दर्द है वो सभी देशवासियों को पता होना चाहिए, सभी युवाओं को वो दर्द भी जानना चाहिए कि कैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले उसके जो एक तरीके 2 टुकड़े हुए उस देश के, और उस वक्त क्या समस्याएं हमने झेली, उस समस्याओं के बारे में लोगों को जानना चाहिए। क्या जनता ने जो समस्याएं झेली, जो लोगों का जो महिलाएं थी उन्होंने क्या समस्याएं झेली, पलायन के समय जो भूखमरी की समस्या हुई उससे कितनी लोगों को समस्याएं हुई, इसके साथ साथ बीमारियां जो फैली उससे कितनी समस्याएं हुई, ये तमाम जो चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ जो अमानवीय अत्याचार हुआ लोगों के साथ, वो तमाम चीज़ें लोगों ने अपने जो अब उनके हाथों में जो तख्तियाँ हैं, जो पट्टियाँ हैं, उन चीज़ों पर इन तमाम चीज़ों का उल्लेख है। और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। हालांकि पूरे देश में इसी तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं विभाजन विभीषिका को लेकर के। हालांकि अब जो सामने की तरफ में ये जो यात्रा निकली थी पिछले थोड़ी देर पहले, वो यात्रा अब यहाँ से एक तरीके से खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ से तकरीबन कुल 150-200 मीटर की ये यात्रा थी जो अब मुख्यमंत्री यहाँ पर जो पटेल प्रतिमा है, मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँच करके इस यात्रा को ख़त्म करेंगे। हालांकि वहाँ पर पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री जो विभाजन विभीषिका को लेकर के एक जो वहाँ पर इसको लेकर के एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अवलोकन भी करेंगे। उसके बाद आम जनता के लिए भी वो प्रदर्शनी खोली जाएगी, जिससे युवा अपने आप को उस समय की यातनाओं से जोड़ सके, अपने वो दर्द जो है वो कहीं ना कहीं महसूस कर सके कि उस समय के नौयुवाओं को या उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने क्या दर्द झेला। और कुल मिलाकर के ये आज विभाजन विभीषिका का जो कार्यक्रम है वो फिलहाल आज यहाँ पर हुआ है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अलग अलग जगहों पर हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को लीड किया। और मुख्यमंत्री के साथ साथ बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी की बात की जाए, चाहे वो स्वतंत्र सिंह जी की बात की जाए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, वो दोनों लोग साथ में मौजूद रहे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह वो भी मौजूद थे और 3 अलग अलग पंक्तियां बना करके एक तकरीबन 100 मीटर से बड़ा एक जुलूस निकाला गया। हज़ारों की संख्या में लोगों ने उस जुलूस में हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों के हाथों में तिरंगा था, लेकिन लेकिन वो पूरी तरीके से मौन थे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सब पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सबने ये जो एक जुलूस है वो निकाला है। और वो दर्द जो 14 अगस्त को पूरे देश ने जो झेला था उसको कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। अब जो प्रदर्शनी लगी है उसमें भी युवा पहुंच करके उस प्रदर्शनी के माध्यम से जो तमाम लोगों की समस्याएं थी वो लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस वक्त उस प्रदर्शनी में पहुँच चुके हैं। उस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने उद्घाटन किया उस प्रदर्शनी का। अब मुख्यमंत्री तमाम जो पटेल प्रतिमा के आस जो पार्क है वहां पर पहुंच करके मुख्यमंत्री उन चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। और जो तकलीफ चाहे युवाओं ने झेली हो, महिलाओं ने झेली हो, जो अत्याचार झेला, जो एक तरीके से बात की जाए जो तमाम महिलाओं के साथ बहुत कुछ बदला, दंगे भड़के, कत्लेआम हुआ, जो लोग बच गए उनमें लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। और ऐसा वो दिन था, ऐसे दिन को किस तरह से याद किया जाए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन उसके एक दिन पहले उस आज़ादी के संघर्ष के लिए हमने कितने लोगों की कुर्बानी दी, कितने लोगों को हमने छोड़ा, कितने लोग हमारे शहीद हो गए। उन लोगों की याद में आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर आज के इस दिन को भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और पूरे देशवासियों से भी इस दिन को मनाने की अपील बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी पिछले वर्ष इसी दिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि 14 अगस्त का दिन हमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाना चाहिए और यही कारण है कि आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जहां आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है, तो वहीं भारत में अब आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा है। 22 साल की ब्रिटिश गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो 2 टुकड़ों में बंट गया और जब भारत 2 टुकड़ों में बटा तो कितना संघर्ष रहा, कितने रिश्तेदार एक दूसरे से छूटे। सिर्फ मुल्क नहीं बदला, सिर्फ किस्मत नहीं बदली, बल्कि सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। 2 टुकड़ों में जब देश विभाजित हुआ तो भारत और पाकिस्तान के अलग अलग कहानियां दर्दनाक रही। कई घर छूट गए, कई लोग टूट गए, कई अपने भीड़ में गुम हो गए, तो कई उस त्रासदी को जिंदगी भर न भूलते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि उस त्रासदी को भी याद रखना चाहिए जिस त्रासदी ने हमें 2 अलग अलग मुल्कों में बांट दिया। और यही कारण है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर, उस स्मृति के तौर पर हम आज के दिन को मना रहे हैं, याद कर रहे हैं। हम लोगों को, उन लोगों को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो लोग इस आज़ादी के संघर्ष में हमें छोड़कर चले गए। कुछ लोग दूसरे मुल्क में हैं तो कुछ इस मुल्क में हैं और यही कारण है कि इस दिन के अवसर पर विभाजन विभीषिका को हम याद कर रहे हैं। किस तरह से वो दिन था, किस तरह से ट्रेनों में लोगों को ठूसा जा रहा था, कत्लेआम हुआ, उन तमाम पलों को कहीं ना कहीं आज अपने स्मृति पटल पर लाया जा रहा है और याद किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है। और देखिए, मौन जुलूस किए है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, न भारत माता की जयकारे लग रहे हैं, न यहाँ पर किसी तरह के नारे लग रहे हैं। सिर्फ मौन धारण यहाँ पर किया गया है और इस मौन के साथ यहाँ पर ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और ये रैली जो है ये यहाँ से रवाना हो रही है और सीधे ये रैली कनाट प्लेस के जो इनर एरिया है वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पर एक बार फिर उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। एक बार फिर तस्वीरों को देखिए और याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को मनाने की अपील की थी और वही आज हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज का ये दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मना रही है। पाकिस्तान के एक अलग देश के रूप में उभरने की दास्तां दिल दहलाने वाली है और यही कारण है कि हमारी स्मृतियों में हमारे आने वाली पीढ़ी को ये याद रखे, ये इल्म रखे कि किस संघर्ष के साथ देश को आज़ादी मिली। यही कारण है कि आज हम जहां पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर आज के दिन को मना रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत पिछले वर्ष से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अपील की थी और आज एक बार फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। श्रद्धांजलि उन लोगों को दी जा रही है, याद उन लोगों को किया जा रहा है जिनके संघर्ष से, जिनके परिश्रम और त्याग से आज हम उन्मुक्त हवा में सांस ले पा रहे हैं। यही कारण है कि जब इस देश का विभाजन हुआ, जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ तो कई लोगों ने अपने को तो छोड़ा है, अपनों को कहीं ना कहीं उन्होंने खोया है। धैर्य का परिचय लोगों ने दिया, लेकिन कई लोग अपनों को खोते भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौरान लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में पिछले साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील और घोषणा के बाद आज भारतीय जनता पार्टी इस दिन को मनाती हुई नजर आ रही है। कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन उस Viewers, we're getting some breaking news at this point of time. A controversial comment being made by Bhupesh Baghel. Bhupesh Baghel has made a controversial comment comparing Savarkar to Jinnah. He says Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country. That is the quote from Bhupesh Baghel. A very, very controversial coming in, where Baghel is equating Savarkar with Jinnah. A very shocking statement coming there, where he says, and I repeat,
I repeat the quote. Savarkar had proposed a two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country. Extremely provocative statement coming. We'll, of course, be showing you that sound bite as well, the sound bite of Bhupesh Baghel, which has come in. Let us listen in to that provocative statement being made by Bhupesh Baghel. ये तो अंग्रेज जाए ही मत, और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी बयान दिया तो बताइए। उन्होंने अध्यक्षता किया, उस समय उन्होंने कहा कि 2 राष्ट्र का उन्होंने स्वीकार किया, और वहीं मोहम्मद जिन्ना ने 1937 में उसको स्वीकार किया। तो 2 राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया, और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आजादी में उनकी भूमिका क्या रही? 1925 में बन गया था ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। इनके तमाम नेताओं को समय बयान देखिए। 1942 में वो कहते हैं कि इसमें शामिल नहीं होना है, कैसे दबाया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वायसराय की चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो अंग्रेज जाए ही मत, और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी बयान दिए तो बताइए। All right, I'm being joined by Sardar R.P. Singh, BJP spokesperson, on the phone line. Thank you for joining us. This is a very shocking statement there coming in from Bhupesh Baghel. What is the first reaction, Mr. Singh? Well, this is frustration of people realizing the relevance of 14th August. Last 2 years, people have started celebrating or marking the occasion of the pre-independence or the partition of the country. And they have no answers on that. Congress has no answer for that. That how did 10 lakh people were killed because of you wanted to draw out a line, and then without getting the proper logic and drawing out the line. How did that only Punjab was divided? So there are no answers to that. How many were killed? How many Punjabis were killed? Or because of partition? Because of partition which was not properly planned by then Congress party. So they have no answer to that. They keep building up their new history which has no ground, which has no evidences, and they so keep building up their new history, and they keep cooking up some new history. Also, and this is happening as India approaches its 75th Independence Day. And just a short while back, Congress had questioned the intent of PM Modi behind observing Partition Horrors Remembrance Day. Where do you think things are leading to politically on such an important day for India? Well, people who used to claim legacy of Nehru, then they should claim the complete legacy of Nehru. Why the half legacy of Nehru, which is for the independence, but what for the partition? So this history which has been revealed to people now, the younger generation of the country should know what India suffered. Give me a second. My very dear Rashid Alvi is also joining us. Hold on, RP Singh. Hold on. I just want Rashid Alvi also to come in and respond. What is the explanation of the Congress? It's a very, very shocking statement coming from Bhupesh Baghel. Mr. Alvi. No, it is a part of the history. What Savarkar said that time, it was he who gave two nations theory. And later on, Jinnah had adopted this. There is no doubt in it. So definitely it is a part of the part of the history. And one thing more, after almost 70 years of independence, whether it is a relevant question to find out. Now it is the fact there are two nations. And Pradhan Mantri has already said if he wants within a period of 11 days, he can conquer. So all of us are with Prime Minister and he should attack Pakistan, and Pakistan should be part of this country. Even the chief of RSS has given this statement. Akhand Bharat. Akhand Bharat means Bangladesh, Pakistan, Afghanistan and even Bangladesh. So
if they want, they should go ahead. Why we should talk about Savarkar and Jinnah? It is immaterial. It is not relevant today at all. Hello? Right. But still, a member from your party spoke about it. That is what the big question is, Mr. Alvi. No, it is all right. What he said, it is a part of history. Two-nation theory was given, first of all, by Savarkar-ji. And later on, Jinnah had adopted it. Jinnah had left this country. He had gone to London. He came back. And then he gave this slogan. So, definitely, Jinnah was following Savarkar. And if you accuse Jinnah, Savarkar is part of that for the two-nation theory. Hello? Right. All right. Thank you, Mr. Rashid Alvi, Congress spokesperson, for joining us here. A very controversial comment has been made by Bhupesh Baghel. And I just want our viewers to hear it once more, perhaps, where he said Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country. Listen in, viewers, before we head to a short break. उन्होंने अध्यक्षता किया उस समय उन्होंने कहा कि दो राष्ट्र का उन्होंने स्वीकार किया और वहीं मोहम्मद जिन्ना ने 1937 में उसको स्वीकार किया। तो दो राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आजादी में उनकी भूमिका क्या रही? 1925 में बन गया था ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। इनके तमाम नेताओं को समय बयान देखिए। 1942 में वो कहते हैं कि इसमें शामिल नहीं होना है, कैसे दबाया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वायसराय की चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो अंग्रेज जाए ही मत, और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी ये बयान दिए हो तो बताइए। Viewers, much more coming up on the other side. Mega crackdown on terror in UP. ATS arrests Jaish terrorist in Kanpur in ISIS plot. And India marks partition horrors, Remembrance Day, but Congress politics continue. Questions PM Modi now. And BJP conducts silent march in various cities on Partition Remembrance Day. Stay tuned. In an exclusive conversation with Republic, Jammu's ADG Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said that terrorist groups are in a bid of infiltration and to target security camps to avoid any act of terror in the Union territory. Anti-drones have been installed and the public have been briefed about the threats. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers as per Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan says in total 4 districts will be covered. Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women's rally which will be carried out after a few days. You're watching live and breaking other top stories from across the country after the sudden demise of India's big bull Rakesh Jhunjhunwala's final rites to be reportedly performed at 5:30 p.m. today in Mumbai's Malabar Hill. Jhunjhunwala was brought dead to Breach Candy Hospital at around 6:45 a.m. this morning. Following the demise of the ace investor of India's global history, Prime Minister Narendra Modi paid condolences to Rakesh Jhunjhunwala's family.
The Prime Minister expressed grief, saying he was indomitable, full of life, witty and insightful. He has left behind an indelible contribution to the financial world. In an exclusive conversation with Republic, Jammu's ADG Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said that terrorist groups are in a bid of infiltration and to target security camps to avoid any act of terror in the Union territory. Anti-drones have been installed and the public have been briefed about the threats. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers as per Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan says in total 4 districts will be covered. Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women's rally, which will be carried out after a few days. You're watching live and breaking other top stories from across the country after the sudden demise of India's big bull Rakesh Jhunjhunwala's final rites to be reportedly performed at 5:30 p.m. today in Mumbai's Malabar Hill. Jhunjhunwala was brought dead to Breach Candy Hospital at around 6:45 a.m. this morning. Following the demise of the ace investor of India's global history, Prime Minister Narendra Modi paid condolences to Rakesh Jhunjhunwala's family. The Prime Minister expressed grief, saying he was indomitable, full of life, witty and insightful. He has left behind an indelible contribution to the financial world. Now, stories from the world of sport. Hubert Hurkacz booked his place in the Montreal Masters final, recovering from the opening set to beat Casper Ruud. He will now face either Pablo Carreño Busta or Dan Evans in the final. A goal from forward Timo Werner from his return to Leipzig was not enough as his side drew 2-2 at the home in Cologne in Bundesliga, and Werner sealed a permanent transfer back to Leipzig earlier this week following a 2-year spell at Chelsea. Days after Nitish Kumar took oath as the Chief Minister of Bihar under Mahagathbandhan government, Bihar Congress in charge Bhakta Das informed that the state Congress unit met with the RJD Supremo Lalu Prasad Yadav and his son Tejasvi Yadav. He also said that the state unit of the party is also planning to hold a meeting with the Chief Minister Nitish Kumar on Sunday, August the 14th. 16 तक होने का संभावना है, जितना जल्दी हो सके होगा, और संयुक्त महागठबंधन तय कर चुका है सब कुछ, और कांग्रेस के बारे में भी जो भागीदारी होगा वो भी सम्मानजनक करने का निर्णय हो चुका है. हम सही समय पर कहेंगे. The Himachal Pradesh Assembly, in line with the few में जो भी आने वाली जनरेशन कोई भी स्पोर्ट्स की है, प्लीज आप मेहनत कीजिए और हम सब मिलके इंडिया की नाम, इंडिया की तिरंगा को हर टाइम ऊपर करते रहिए. अगस्त को हमारे देश का 75वां यौम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो आज हम एडवांस में सेलिब्रेट करने इस पहाड़ी पर आए हैं. इस पर हम अपना तिरंगा फहराने आए हैं, लहराने आए हैं. भारत माता की जय, भारत माता की जय. फौजी ने तिरंगे की लाज रखी. अगर विजय मिली तो तिरंगा लहराया, और अगर वीरगति मिली तो तिरंगे में लिपट कर आया, और ये उस फौजी का वादा था.
अगस्त को हमारे देश का 75वां योम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो आज हम एडवांस में सेलिब्रेट करने इस पहाड़ी पर आए हैं। इस पर हम अपना तिरंगा फहराने आए हैं, लहराने आए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Uttar Pradesh anti-terrorist squad makes another arrest linked to a terror case, second arrest in just 2 days. UP ADG Law and Order says arrested Saifullah linked with Jaish-e-Mohammed terrorist Nadeem, who was arrested on Friday. Uttar Pradesh anti-terrorist squad, the latest now also coming in from Jammu. ADG speaking to Republic TV stating that all measures essentially been taken ahead of the Independence Day. Starting this edition of This is Exclusive with a story that we've been tracking very closely. Uttar Pradesh anti-terrorist squad has nabbed another terrorist associated with Jaish-e-Mohammed from Kanpur. The UP ATS had arrested Habibul Islam alias Saifullah, whose name surfaced after the ATS arrested Jaish-e-Mohammed, the terrorist Mohammed Nadeem, on 12th of August. Now, he's in fact suspected of creating at least 50 virtual IDs for many terrorists, including Pakistani and Afghani militants. Terrorists rather. Here's a Republic investigation into the case. Well, in fact, let me bring in my colleague Vivek, who's getting us the latest details. Vivek, ये बताइए कि 2 अरेस्ट अब हो चुके हैं। क्या ये मान सकते हैं कि एक तरह से कोई मॉड्यूल चलाया जा रहा था? क्योंकि अगर मोहम्मद नदीम की बात करें, मोहम्मद नदीम का भी ये कहना था कि वो कई सालों से 2018 से लगातार वो अपने हैंडलर से बात करता था, और साथ ही साथ अब जो ये नया अरेस्ट हुआ है, इसके बाद क्या ये कह सकते हैं कि एक तरह से मॉड्यूल जिसे बस्ट किया गया है? बिल्कुल एक मॉड्यूल यूपी एटीएस ने बस्ट किया है, और नदीम की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार यूपी एटीएस नदीम से पूछताछ कर रही थी, और नदीम से पूछताछ में ही सैफुल्लाह का नाम निकल के सामने आया था। और सैफुल्लाह जो कि फतेहपुर का रहने वाला था, हालांकि वो मूल निवासी बिहार का है, लेकिन वो लंबे समय से फतेहपुर में रह रहा था। और यूपी एटीएस को जब नदीम से पूछताछ के बाद सैफुल्लाह की जानकारी हुई, तो यूपी एटीएस की कानपुर यूनिट ने फतेहपुर से सैफुल्लाह को उठाया और उसके बाद कानपुर ला करके उससे पूछताछ की, और उस पूछताछ में तमाम अहम खुलासे हुए, जिसमें वर्चुअल आईडीज को लेकर के जो नदीम के बारे में जानकारी मिलती कि वर्चुअल आईडीज बना करके वो तमाम विदेशी अकाउंट से बात करता था, और उसी के माध्यम से वर्चुअल आईडीज से टेलीग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों से पाकिस्तान और तालिबान में वो जोड़ा हुआ था। और अब ये पता चला है कि सैफुल्लाह ही वो मेन शख्स था जो इन वर्चुअल आईडीज को बनाने का मेन काम करता था। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है, और जिस तरीके से नदीम की गिरफ्तारी के बाद तमाम अलग अलग खुलासे हुए थे, उसको कहीं ना कहीं अब वापस से जब जो उससे पूछताछ हुई नदीम से, और उसके बाद सैफुल्लाह का नाम निकल के सामने आए, यह माना जा सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि नदीम का एक बड़ा मॉड्यूल था, ढेर सारे लोगों को वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था, और उसी कड़ी में सैफुल्लाह का भी नाम निकल के सामने आया है, जो सैफुल्लाह वर्चुअल आईडीज बना करके नदीम को देता था। और 50 से अधिक ऐसे लोगों की वर्चुअल आईडीज बनी हुई थी जो लोग पाकिस्तान और तालिबान में बैठे हुए लोगों के संपर्क में थे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा मॉड्यूल बस तो हुआ ही है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, और अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा
बड़ा नेक्सस था, बड़ी कोशिश थी देश को नुकसान पहुंचाने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की, पर यूपी एटीएस ने अपनी सतर्कता से इन सभी ये जो मॉड्यूल है इसको बस्ट किया है। नदीम के बाद सैफुल्ला की गिरफ्तारी हुई है और अब सैफुल्ला की गिरफ्तारी करने के बाद अब उससे भी उसको रिमांड पे लेकर के पुलिस उससे पूछताछ करेगी और कुछ और जो अन्य पहलू हैं वो निकल के सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं, दोनों जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे और इसके बाद वर्चुअल आईडीज के माध्यम से लगातार संपर्क में तो थे ही थे, पर आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान जाने की फिराक में भी थे और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के फिर ये वापस आकर के और जो अपना ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल था उसको बढ़ाने की कोशिश में थे। तो एक बड़ी साजिश थी और इसके साथ साथ पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि जब नदीम की गिरफ्तारी हुई थी तो नदीम की गिरफ्तारी में कैसे निकल के सामने आया था कि नुपुर शर्मा की हत्या करने का भी इनको एक टारगेट मिला हुआ था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जिसको लेकर के ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने फिलहाल ये बड़ा एक मॉड्यूल बस्ट किया है और पुलिस उस पर लगातार यूपी एटीएस पर लगी हुई है। जी विवेक, हर कोई ये जानना चाहेगा कि ये कितने सालों से सैफुल्ला नदीम ये कितने सालों से यूपी में इस मॉड्यूल के साथ जुड़े थे और आखिरकार उनकी अगर मोटिव की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो वो क्या थे? क्योंकि 2018 से अगर वो लगातार अपने हैंडलर्स से बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई साल बीत चुके हैं, तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं नदीम और सैफुल्ला दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जी बिल्कुल, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि एक चीज़ में समझनी होगी कि सैफुल्ला की उम्र मात्र अभी 19 साल है, तो मात्र अभी 19 साल की उम्र, पिछले 2-3 साल से इसका भी इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में बताया जा रहा है। तो इस नई उम्र के लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश जैसे मोहम्मद की थी और उसी कड़ी में पहले नदीम फंसा और उसके बाद सैफुल्ला फंसा। हालांकि सैफुल्ला की जो वर्चुअल आईडीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल आईडीज़ की जो मैनेज करने का जो चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ वो सैफुल्ला ही करता था और नदीम के लिए भी वो सैफुल्ला ही मैनेज करता था। पिछले 3 से 4 साल का इनका कनेक्शन तो फिलहाल बताया ही जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का मॉड्यूल और कितना बड़ा है और कितने लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि एक बड़ी साजिश, बड़े लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश। और अभी जो फिलहाल का इनका टारगेट था वो नुपुर शर्मा की हत्या करने का टारगेट, जैसा पिछले दिनों बताया गया था पुलिस के द्वारा कि नदीम ने पूछताछ में बताया कि उसको जैश ए मोहम्मद की तरफ से, उसके अपने आकाओं की तरफ से नुपुर शर्मा की हत्या करने को लेकर के भी कहा गया था। तो ये लोग अलग अलग ऐसे टारगेट्स पर काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक इस देश को दहलाने की कोशिश में भी थे। इस देश में कहीं ना कहीं जो अस्थिरता है उसको पैदा करने की कोशिश में थे। पुलिस लेकिन फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज सैफुल्ला की जिसमें गिरफ्तारी हुई है और जो नदीम है उससे तो पूछताछ चल ही रही है, लेकिन अब सैफुल्ला से भी पुलिस अपनी पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर के उससे पूछताछ करेगी और वो सारे पहलू जानने की कोशिश करेगी कि इतनी कम उम्र में जो इन लोगों का जो एक तरीके से ब्रेन वॉश हुआ है वो किस कारण से हुआ है और उसके बाद और इनके मंसूबे क्या थे। तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस का मानना है कि जल्द ही इन तमाम पहलुओं को लेकर के पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा कि 15 अगस्त के पहले जिस तरीके से इनके मंसूबे थे देश में कहीं ना कहीं कुछ गलत करने के, तो वो एक बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए वो एक बड़ा इनके मंसूबों पर पानी फेरा है पुलिस ने, यूपी एटीएस ने। और यूपी एटीएस लगातार इस तरीके के ऑपरेशन, क्योंकि हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में 3 बड़ी गिरफ्तारियां यूपी एटीएस ने की। इन दोनों के अलावा एक सुबाउल्लाह की भी गिरफ्तारी हमने देखा कि आजमगढ़ से हुई थी और उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारियां। तो ये एक बड़ा रैकेट लगातार चल रहा है जिसको पुलिस ने एक तरीके से इसको खोला है और अब पूछताछ के बाद देखना होगा कि और इनके मंसूबों के बारे में क्या जानकारी निकल के सामने आ पाती है। बहुत धन्यवाद विवेक. We'll also get at more details. Now, what exactly has transpired in the last few days? The first big arrest that was basically made was on 12th of August, and thereafter there was more lead that was received by the Uttar Pradesh's anti-terrorist squad that basically led to another terrorist associated with Jaish-e-Mohammed being arrested from Kanpur. In fact, we give it to understand that Habibul Islam, alias Saifullah, whose name basically surfaced after the arrest of Mohammed Nadeem, was arrested because they suspect that it is he who created at least 50 virtual IDs for many terrorists, including Pakistani and Afghani terrorists. Take a look at this report. On Friday, the ATS nabbed Mohammed Nadeem, a Jaish-e-Mohammed and Tehreek-e-Taliban Pakistan-linked terrorist from Uttar Pradesh, Saharanpur.
thus averting a major threat ahead of Independence Day. And after 2 days, the UPATS nabbed 19-year-old Habibul Islam alias Saifullah for allegedly having links with terror group Jaish-e-Mohammed and being in touch with handlers in Pakistan and Afghanistan. This comes close on the heels of the arrest of Nadeem, who has tasked with carrying out a fidain attack on suspended BJP spokesperson Nupur Sharma. हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को विवेचक के निर्देश पे फतेहपुर से कानपुर लाकर फील्ड यूनिट कानपुर द्वारा पूछताछ की गई तथा साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। यह व्यक्ति मूलतः जनपद मोतिहारी बिहार का रहने वाला है। हबीबुल द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह नदीम को जानता था तथा दोनों एक ही आतंकी नेटवर्क जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। हबीबुल इस्लाम वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है तथा इसी में नदीम सहित कई पाकिस्तानी एवं अफगानिस्तानी आतंकवादियों को लगभग 50 वर्चुअल आईडी बनाकर दी है। And amid the alleged links between the two arrested, Republic went to the house of Muhammad Nadeem to investigate the matter. His mother says he's innocent. मेन गेट है, यहाँ पर देख सकते हैं एक बरामदा है जहाँ पर उनके पिताजी जो हैं वो लेटे हुए हैं और आस पड़ोस के कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये हम घर के अंदर आ गए और यहाँ पर जो है अंधेरा है। मोहम्मद नदीम की माँ जो है यहाँ पर लेटी हुई हैं, उनकी तबीयत जो है वो बहुत ही ख़राब बताई जा रही है। और साथ ही साथ आस पड़ोस की कुछ आंटी जी, ये बताइए कि नदीम के बारे में, नदीम कैसा लड़का था? भाई वो तो कुरान का पढ़ा लिखा, लेकिन उस पर ये आरोप लगा है कि वो आतंकी संगठनों के साथ था। भाई देखो कोई लगाओ, मैं तो ऐसा देखण आई, मरीज पड़ी बेचारी, ऐसा देखण आई मैं दोनों। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं साफ तौर पर नदीम की माता की भी तबीयत खराब है और नदीम के पिताजी की भी तबीयत खराब है, वो भी लेटे हुए हैं। आइए हम चल के आपको उस कमरे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं जिस कमरे से नदीम को गिरफ्तार किया गया था। आप ये बताइए कि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं जी? ये बताइए, आप नदीम के दोस्त हैं? नहीं जी, पड़ोसन गांव की है जी, बस गांव की तबीयत खराब है, आते रहते हैं इनके पास बीमार को देखने के लिए। तो नदीम से आपकी बातचीत कभी होती थी? ना, आज तक कभी नहीं? ना जी, कोई बात नहीं होती। अच्छा, कौन से कमरे से नदीम को गिरफ्तार किया गया था, ये दिखाएं। आ जाइए, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास यूपीएटीएस की टीम आई थी और यूपीएटीएस की टीम, यही कमरा है वो, देखिए इसी कमरे में नदीम और उसका भाई तैमूर दोनों सोते थे और 12:30 बजे के आसपास जो है नदीम को इसी कमरे से गिरफ्तार किया गया। अंदर की तस्वीरें देखिए, 2 खाट यहाँ पर लगे हुए हैं और एक पर तैमूर सोया था, एक पर नदीम सोया था। और रात के 12:30 बजे के आसपास इसी कमरे से जो है वो नदीम को गिरफ्तार किया है यूपीएटीएस की टीम ने। जैश-ए-मोहम्मद और टीटीपी के साथ जो है वो संपर्क में लगातार था नदीम, और उसके जो चैट हुए हैं सैफुल्लाह के साथ, उससे साफ तौर पर यही खुलासा हुआ है कि कई लोगों को साथ में अपने जोड़ने का भी उसको काम सौंपा गया था, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से। His father says the allegations are baseless. हमें इसके बारे में नहीं मालूम, अगर उसने इतनी गलती कर दी तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। As the Uttar Pradesh police digs out the fact in the case, more facts are yet to be unraveled. Bureau Report, Republic TV. Terror groups across the border they certainly appear to be extremely active at this point in time, and that is the reason why a lot of the state police right now, they have upped the ante. Speaking to Republic on the terror threats against the nation ahead of the Independence Day, ADG Jammu Mukesh Kumar spoke on how exactly our security forces essentially keeping a constant vigil across the border and also in the hinterland to avert these threats. He spoke to my colleague Kursimran. कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो ये दिखाता है कि आतंकी संगठन जो हैं लगातार प्रयास में जुड़े हैं, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए हो, चाहे उनकी इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स हों, चाहे वो किसी को टारगेट करना हो, चाहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप्स को टारगेट करना हो। इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं
और हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास सफिशिएंट फोर्स अवेलेबल है। फोर्स को सेंसिटाइज भी किया गया है ग्राउंड लेवल पे, सभी डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज डीआईजीज को सेंसिटाइज किया गया है कि किस तरह के थ्रेट परसेप्शंस हैं और उनके लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं। जो कल का वाक़या हुआ है जो आर्मी कैंप वाला, उसके मद्देनज़र भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं ताकि जो हमारे सिक्योरिटी कैंप्स वैम्प्स जो हैं, चाहे पुलिस स्टेशंस हों, इनको सिक्योर रखा जाए। सर, लगातार जो हमने देखा कि ड्रोन और स्टिकी बॉम्ब एक बड़ी थ्रेट के तौर पर उभर कर आए हैं। पहले भी एक हमला हुआ जिसकी आप जांच भी कर रहे हैं, तो इन दोनों से निपटने के लिए किस तरह से तैयारी जो है की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो वेन्यू है जिसमें 15 अगस्त का प्रोग्राम होना है, उसको किस तरह से सिक्योर किया जाए? जो वेन्यू है उसकी सिक्योरिटी के तो बहुत पुख्ता इंतज़ाम कर लिए गए हैं, एंटी ड्रोन मेजर्स भी लगाए गए हैं। जहाँ तक रही ड्रोन के ज़रिए वेपन्स भेजने का सवाल जो है, उस पे बॉर्डर ग्रिड को काफ़ी मजबूत किया गया है। बॉर्डर पे टेक्निकल गैजेट्स वगैरह भी अच्छी मात्रा में लगाए हैं ताकि इस तरह के जो ड्रोन के ज़रिए जो थ्रेट्स हैं उसको मिटिगेट जितना भी हो सके, जिस हद तक भी वो किया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ नाके हैं जो पूरे जम्मू और कश्मीर के बीच में जितनी भी सड़कें हैं उस पे लगाए गए हैं। नाकों में भी टेक्निकल गैजेट्स वगैरह लगाए गए हैं और उनके जो नफरी डिप्लॉयड है उनको भी सेंसिटाइज किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी तरह की जो ड्रोन के ज़रिए जो वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है या ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। पिछले 1 महीने में बहुत कम इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसको भी हम नाकाम कर देंगे। Well, that was an exclusive interview by ADG Jammu to my colleague Gursimran about the threats that we are facing at this point in time. And essentially what has happened is that launch pads across the borders have also been extremely active. But there has been multiple attempts that have been made to infiltrate, but that has been quite unsuccessful. Getting us this exclusive report was my colleague Gursimran, who is also joining us live on this broadcast. Gursimran, once again, the only reporter to get us this exclusive report from Jammu about the threats that we are facing at this point in time. First, I would like to ask you, in terms of the nature of the threats that have been coming in, what is it that it looks like at this point in time? Is it directly coming in from those terrorists who are making the attempt to infiltrate, or is it also about those sleeper cells which have been extremely active in Jammu and Kashmir? See, Shravan, this is a multi-level threat that is coming not only from the terrorists who are waiting in launchpad, but also from the overground worker, as well as terrorists who have managed to sneak in inside the territory. Because we know that it's today itself that the Northern Army commander, he himself has visited the place where a Fidain attack was planned by the Pakistani terrorists in the Rajouri district's Pargal area that was fired by the Indian Army. But in that retaliation, 4 Jawans of the Indian Army attained martyrdom. And today the Army commander, Northern Army commander himself was at that very spot. He reviewed the operational preparedness as well as the prevailing security scenario, because as per the inputs that we are getting in, there are still more than 2 terrorists that are active in the same area, and multiple terrorists are waiting in the launch pads, as being confirmed by the ADG Jammu Mukesh Singh, who has shared the key details about the terror plot of targeting the security force and their installation. Now coming to the threat, there is a multi-level threat that is being posed not only by the Pakistani terrorists but also from the overground workers and the sleeper cells of the terrorists, because they have been into the radicalizing these terror ranks and the terrorists and even the youth of the country, so that they can join the terror rank and carry out a major terror strike. So this all is being taken care by the Jammu and Kashmir police. They are trying to make it very sure that these terrorists and their terror sympathizers are caught and neutralized well within a time, because the agency's inputs suggest otherwise, that these terrorists are planning something big. They are planning to attack the security forces installations in the coming days, especially ahead of the 15th August and during the 15th August. Shawan. Well, Gursimran, also with regards to the situation right now across the border, at least in the launch pads, what is it that you are picking up? Is there an increased activity? Keeping in mind that they haven't really been very successful in making those infiltration attempts. The grid, the security grid, does appear to be quite robust at this point in time.
Yes, the security grid is robust, but today the Northern Army commander has also said one important thing, that it is not possible to stop 100% of the infiltration. Though what the forces are doing is that they are working round the clock in synergy with each other. And if there is any infiltration that is taking place, the sister agencies are informed well within the time, and they are neutralizing that terrorist before reaching the hinterland or before establishing the base. So this has been one of the biggest achievements of the forces, the synergy that has been between the forces, that has led to complete wipe out of the total leadership of the terror outfit, be it Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba, or their outfits in Jammu and Kashmir. So this is something that has helped the security forces. But yes, the infiltration is a challenge. Apart from that, the weapons are coming from across the border. This has been the threat, because we have seen major terror ammunitions being recovered by the security forces time and time, even from the Srinagar city and even from Jammu. So this clearly shows that the Pakistan is now relying on the drones to push weapons into the Indian territory and the local terrorists to carry out terror strikes. Well, Gursimran, just thank you very much for getting us all the latest details on this story. We'll be keeping a close watch, and given the fact that there have been increased activity, at least across the border, and the fact that there has been an attempt that has been made by multiple terror groups to carry out with the infiltration attempts across the border. On the other side, as India marks the Partition Horrors Remembrance Day, Congress politics continues, questions Prime Minister Modi now. These kind of trainings are very important, because this entire region is more of the mountainous rather than plains. So the Jawan coming to the Kargil battle school has to go all kind of training. हमारे सेना में लड़ाई लड़ने की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास तथा दुश्मन को निष्क्रिय करने का ताकत है. You have to be physically fit if you have to be in this kind of weather and in this kind of region. And now let's get you some news from across the country in brief. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has received death threats in a letter addressed to Devendra Tiwari, National President of the Bharatiya Kisan Manch. One Mohammad Ajmal said that the regime of Chief Minister Adityanath, people... Field Marshal Sam Manekshaw once famously said that if a man says he's not afraid of dying, he's either lying or he's a Gurkha. मैं जो भी आने वाली जनरेशन कोई भी स्पोर्ट्स की है, प्लीज आप मेहनत कीजिए और हम सब मिलके इंडिया की नाम, इंडिया की तिरंगा को हर टाइम ऊपर करते रहिए. ये चाहता हूँ, हमेशा दिल में सोता हूँ शाम को, मेरे को दर्द होता है कलेजे के अंदर कि चाइना आए तो आज भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ. युद्ध भूमि में दुश्मन से जब हम लड़ा करते थे, तूफानों को मोड़ दिया करते थे. अभी जितना बॉर्डर पर मारते हैं उतना तो हम रोड पे छोड़ दिया करते थे. Even as the nation celebrates the 75th independence year, you have the Congress courting yet another controversy. This time, Chhattisgarh Chief Minister
Bhupesh Baghel has made a controversial comment comparing Veer Savarkar to Jinnah. He says Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country. Now, it remains to be seen which history is the Chhattisgarh Chief Minister essentially trying to refer to, given the fact that this is largely been criticized by one and all, be it historians or for that matter even political leaders right now, saying that the simplicity that with which it has been attached right now, simply equating the both, seems to be completely wrong. And secondly, there appears to be an agenda behind this entire attempt that has now been made by the Congress party to try and equate Jinnah with Veer Savarkar. Let's listen in to the controversy that was quoted by the Chhattisgarh Chief Minister following this remark that he made. Listen. उस समय उन्होंने कहा कि दो राष्ट्र का उन्होंने स्वीकार किया और वहीं मोहम्मद जिन्ना ने 1937 में उसको स्वीकार किया। तो दो राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आजादी में उनकी भूमिका क्या रही? 1925 में बन गया था ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद। इनके तमाम नेताओं को समय बयान देखिए। 1942 में वो कहते हैं कि इसमें शामिल नहीं होना है, कैसे दबाया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वायसराय को चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो अंग्रेज जाए ही मत, और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी ये बयान दिए हो तो बताइए। Let me also bring in my colleague Madhurima, who's been tracking this story very closely. Yet another controversial remark that has now been made by the Chhattisgarh Chief Minister. Madhurima, what more are you picking up? Is there any clarification, or this is yet another off-the-cuff remark that has been made by the Chief Minister? Well, Shravan, this is not the first time that the Grand Old Party has picked up Savarkar to attack the BJP by linking its ideologue RSS. There have been multiple times where the Congress party has picked up Savarkar to attack the BJP. However, the BJP has also lashed back very severely, asserting that it is not the BJP or Savarkar or the RSS which had the monarchical high-headedness in their bloodline, and that they have been serving the country and their ideology has been to serve the country. However, the Congress party has always said that Savarkar was not the kind of hero the BJP wants to portray it. And once again, we have Bhupesh Baghel who made this statement that Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal, and they tried their best not to make sure that the British do not leave the country. However, this also comes as after Shravan, when the BJP had shared a video on Partition blaming Jawaharlal Nehru for it, and attacking which this particular comment of against Veer Savarkar was given by Bhupesh Baghel. So war of words has increased between the two national parties just ahead of 76th Independence Day. That will be tomorrow. We'll be celebrating all across the country. But once again, the Congress party with Bhupesh Baghel inciting controversy with dragging the Savarkar's name just ahead of Independence Day. Back to you. Well, thank you very much, Madhurima, for getting us the latest details. Yet another controversy quoted by the Congress party, not just the Chhattisgarh Chief Minister. A short while back, you also had senior Congress leader Jairam Ramesh taking to Twitter, talking about the Partition Horror Remembrance Day. This is also once again been politicized by the Congress party, where essentially the Congress party is targeting Prime Minister Modi.
NCP leaders Anil Deshmukh and Nawab Malik and Shiv Sena leader Sanjay Raut, who have been arrested in money laundering cases by the Enforcement Directorate, are now lodged in Arthur Road Jail in 3 different barracks. However, Malik, who was arrested in February, is currently admitted into a hospital in Kurla for treatment. Shiv Sangram party leader Vinayak Mete killed in road accident at Khopli Tunnel in Maharashtra's Raigad. Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde speaks on his demise, stating he had contributed significantly towards the Maratha Andolan and was a good leader. A Dalit child allegedly beaten severely, causing his death over drinking water in Rajasthan's Jalore. He was allegedly beaten up for touching a water container at his school and was beaten by his teacher. The big bull of the Indian markets, Rakesh Jhunjhunwala, is no more. Born in the year 1960, Jhunjhunwala passed away at the age of 62. He was brought dead this morning to Mumbai's Breach Candy Hospital at 6:45 a.m. Heading companies, Hungama.
And now let's get you some news from across the country in brief. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has received death threats in a letter addressed to Devendra Tiwari, National President of the Bharatiya Kisan Manch. One Mohammad Ajmal said that the regime of Chief Minister Adityanath, people like Tiwari have been too indulgent in Gauraksha and Gaushalas and warned them to mend their ways or face dire repercussions. President Draupadi Murmu will deliver her maiden address to the nation on August 14th on the eve of Independence Day. The address by the President is a regular feature of Independence Day celebrations. On the eve of Independence Day, Republic from Siachen base camp. Bigger challenge for the Indian Army, the soldiers, is not only fighting with the enemy, but also an adverse.
The Amity BBA has been ranked India's #1 BBA in the recently released Times of India B-School 2022 rankings, a testimony to Amity BBA's globally benchmarked standards in education. The big bull of the Indian markets, Rakesh Jhunjhunwala, is no more. Born in the year 1960, Jhunjhunwala passed away at the age of 62. He was brought dead this morning to Mumbai's Breach Candy Hospital at 6:45 a.m. Heading companies, Hungama Media and Aptech, among others. The veteran stock market investor had recently inaugurated the low-budget airlines Akasha Air, often referred to as India's own Warren Buffett. He passed away at the age of 62 following health complications. In other news, total of 12 bodies recovered so far. In August 11, boat capsize incident near Banda in UP. Rescue operations continue following disaster as NDRF and SDRF continue to look for those remaining. Shiv Sangram party leader Vinayak Mete killed in road accident at Khopli Tunnel in Maharashtra's Ghar. Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde speaks on his demise, stating he had contributed significantly towards the Maratha Andolan and was a good leader. A Dalit child allegedly beaten severely, causing his death over drinking water in Rajasthan's Jalore. He was allegedly beaten up for touching a water container at his school and was beaten by his teacher.
शामिल है। जो मंदिर है उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को शुरू करें। अब आप मेरे साथ 3 बार मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 76वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत 75 साल पूरे कर रहा है। 14 अगस्त के दिन को विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को